Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, 10th class. How are you? Today we will complete our review questions. As you know that we have successfully completed alhamdulillah our first chapter of 10th class biology. Now it's time to complete review question. First of all we will solve multiple choice question. क्लास में तो ये होता है कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ और हम वन बाय वन सारी ऑप्शंस को देखते हैं और जो बेस्ट होती है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देती हूँ और आप उसको जो है वो अपनी बुक पे सॉल्व कर लें, ठीक है। Number 1, the process of gaseous exchange involve, option C is correct, getting oxygen from the air and removing carbon dioxide. Number 2, most of gaseous exchange in leaf occur through, option A is correct, stomata. Number 3, how many bronchi are there in the air passageway? Number B option is correct, 2. Where does the gaseous exchange occur in human? Option D is correct, alveoli. Number 5, which structure actively helps in taking the air out of lungs? Option D, diaphragm is correct. Number 6, the primary chemical stimulus for breathing is the concentration of, option A is correct, carbon dioxide in blood. Number 7, point out the false statement about respiration. ठीक है, all these are correct. Only C option is incorrect and it is in emphysema. The walls of alveoli break and there is more surface area. You know that there is less surface area. Number 8, a disease involving the breakdown of air sacs of the lungs is, option D, emphysema. Number 9, which process does not occur in the nasal cavity? Option D is correct, exchange of gases. Number 10, what type of blood vessels surround the alveoli? Option C is correct, capillary. Right, so all these about multiple choice question, and the next part is of short questions. Well, you can make your own notes regarding these questions, understanding the concept and short questions, right? Or you can take any help from any helping book. In my lecture, I have explained the answer of all these questions and told you that these questions are very much important with reference of your exams as well. Short question number 1, differentiate between breathing and cellular respiration. The answer of this question is present lecture number 1 and lecture number 2, and you have to write the answer of this question on your notebook. Number 2, trace the path of air from the nasal cavity to the alveoli, right? The answer of this question is also present in my lecture, and you can help from anywhere, internet, your textbook, any helping book, right? You have to make notes for yourself. Number 3, how will you differentiate between a stoma and lenticels, right? You have to differentiate that what is stoma and what is lenticel. Next part है understanding the concept. Well, these points are also very much important. Number 1, how do the different parts of plant body exchange gases with the environment? You know how they exchange gases. They exchange gases with the help of stomata, with the help of lenticels, and through general surface also. Number 2, write down the steps of inhalation and exhalation, right? All these steps are present in your textbook. Number 3, state the signs and symptoms, causes and treatments of bronchitis, emphysema and pneumonia. All these are very well explained in my lectures and your textbook. I have given you headings, all right. So the next part is, how does the tobacco smoke damage the respiratory system? ठीक है, तो जितने भी इसके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपने इसमें एक्सप्लेन कर देने हैं, लिख देने हैं, राइट। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर आपको ये वाला जो पोर्शन है नेक्स्ट वन, द टर्म्स टू नो, अगर इसमें से कोई टर्म आपको नहीं आती, इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में चैप्टर की कोई गैप रह गया है, ठीक है। तो आप इन टर्म्स को एक तो आपने बड़ी अच्छी तरह से याद करना होता है, लर्न करना होता है, और दूसरी बात अंडरस्टैंड करना होता है, और इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक आपको समझ नहीं आया। तो वन बाय वन मैं इन सबको देखती हूँ। एल्वुलर डक्ट, ठीक है, एल्वुलर की तरफ, एल्वुलाई की तरफ जो डक्ट्स जाती हैं उनको बोलते हैं एल्वुलस इज़ अ सिंगुलर ऑफ एल्वुलाई, एयर सैक्स, एस्मा इज़ अ डिजीज़, ठीक है, इज़ अ काइंड ऑफ एलर्जी, ब्रीदिंग,
ठीक है, ये भी एक फिज़िकल जो है वो फिनोमिना है एयर के इन एंड आउट होने का। ब्रोंकियोल्स, राइट, जो ब्रोंकस है उसकी फर्दर डिवीजन्स हैं। ब्रोंकाइटिस इज़ अ डिजीज़ and disease of inflammation of lungs. Bronchus is the singular of bronchi and the further division of trachea. Diaphragm is a muscular portion beneath the lungs. Emphysema is also disease in which air sacs walls got damaged and they destroyed, and so they lessen the surface area. Exhalation, taking out of oxygen air. Gaseous exchange, you know, that is exchange of gases. Inhalation, taking in oxygen and air or air. Larynx is a part of air passageway. Lenticels also pore-like structures which are present on plants to exchange gases. Nasal cavity, it is present in your nose. Nostrils, these are opening of your nose. Phenomena is a disease of lungs, right? Trachea, ये भी windpipe, trachea or windpipe in your respiratory tract. Vocal cords, they are present in trachea and help to produce voice. सो ऑल दिस टर्म्स यू नो वेरी वेल. अगर इसमें से आपको कोई टर्म नहीं आती तो आप उसको रिवाइज करें और इसको याद करें. वेल दीज एक्टिविटीज़ आर प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो एंड यू कैन डू नंबर 1, नंबर 3, 4 in your lab, but number 2 you can do it at your home. What is that? Investigate the breathing rate at rest and after exercise. You have to calculate your breathing rate at rest and after exercise, and you have to write its calculation in your notebook. The next part is very interesting and I like it very much because it gives you a think tank regarding your topic. Science, technology and society. Number 1, evaluate the effect of tilling on roots for better exchange of gases with the soil air. What is tilling of root? It's to prepare soil of garden, and you have to add some organic material in it, and 8 to 10 inches तक आपने इस soil को prepare करना होता है ताकि roots उसके अंदर easily penetrate कर सकें, अंदर जा सकें, मट्टी नरम हो जाए और इसके अंदर gases जो हैं वो easily exchange कर सकें. जैसे आप उसकी tilling करते हैं तो soil जो है वो rich हो जाती है ऑक्सीजन से, ठीक है, और जो रूट है इसको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती फिर मट्टी के अंदर जाने के लिए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है. फिर भी आप इसको सर्च करेंगे नेट से, ठीक है, हेल्पिंग बुक से देखिएगा और इसको आपने अपने नोट्स जो हैं उसमें प्रिपेयर करने हैं. आउटलाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेटर फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इन पेशेंट्स. आजकल आप कोविड-19 और पेंडेमिक कंडीशंस जो आजकल चल रही हैं इन द होल वर्ल्ड, यू नो दैट व्हाट इज़ आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, के इसमें जब पेशेंट जो है वो खुद उसके लंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो खुद ब्रीथ नहीं कर सकता, तो आर्टिफिशली उसको वेंटिलेटर के थ्रू जो है वो ब्रीदिंग में इसको हेल्प किया जाता है. नंबर 3, इंटरप्रेट द डेंजर्स ऑफ ब्रीदिंग इन एग्जॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जब भी फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, मतलब पेट्रोल है, गैस है, ठीक है, तो इन चीज़ों की जब बर्निंग होती है तो इससे आपकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको क्या ख़तरा हो सकता है, ठीक है. ये भी आप सर्च करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, जो लिंक्स नीचे दिए हुए हैं इनसे भी मिल जाएगा. रैशनलाइज मतलब एक आप क्लियर करें, आप एक्सप्लेन करें द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन इन होम्स. ये भी आपको पता है कि वेंटिलेशन जो है घरों में वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि फ्रेश एयर जो है वो आती रहे. घर के अंदर जो इन्फेक्शन वाली एयर है जैसे फ्लू है और इस तरह की दूसरी छोटे मोटे डिजीज़ के जर्म्स जो हैं वो और एरोसोल जो हैं वो हवा में होते हैं, तो जब आप वेंटिलेशन पॉसिबल करते हैं होम की तो उससे ये होता है कि फ्रेश एयर अंदर आती है और उसको जो बैड एयर है उसको रिप्लेस कर देती है. नंबर 5 है असेस द एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद स्मोकिंग ऑन हेल्थ. इसकी काफ़ी डिटेल आपकी बुक में भी मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको आपकी हेल्पिंग लिंक से जो है वो हेल्प मिल जाएगी. पॉइंट आउट बैड सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्मोकिंग, राइट. नंबर 6 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनलाइन लर्निंग जो है आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है स्टूडेंट्स, ये आप ज़रूर सर्च किया करें. अपने लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको 4th वन जो है लिंक ये दिया था. इसके अलावा बाकी ऊपर वाले तीनों लिंक्स जो हैं वो इसी के साथ रिलेटेड हैं. आप इन तीनों लिंक्स को भी ओपन करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें
इसमें आपके पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे ये पूरी जो एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड मटेरियल जो है इसके नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, राइट। और कोई कॉन्सेप्ट अगर रह गया है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन योर ग्रुप ऑफ 10th क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप इन 10th क्लास, ठीक है। उसमें मेरा कॉन्टैक्ट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है या आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। So it's all about our review questions of chapter number 10. Inshallah, in next lecture we will start our next chapter of homeostasis. होम्योस्टेसिस मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। होम्योस्टेसिस जो है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है, ये हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लिव हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।